करेंगे आज भी, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे। या मैं ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला इसमें, क्वेश्चन मार्क्स और वो सब बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, मेरे बस की बात नहीं। अबे यार एक से थंबनेल लगती नहीं है भाई, हद है। लग गई। Audentus Fortuna fucking Yuvat, Audentus Fortuna fucking Yuvat, welcome to the stream master Parasite। कैसे हो आप यार? पता है मेरे को इस गेम में ट्रॉफी मिल गई जिसमें जिसके हिसाब से मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए बेस गेम वाले। पता है मैंने क्या डिसाइड किया है? ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, मैं नहीं करने वाला सारे, बहुत ग्राइंडी और रेपिटेटिव स्टफ ही है इसमें। आई वुड ओनली डू लाइक मतलब कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही गए हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर। ये देखो, ये जो है ना, जैसे ये क्वेस्ट अवेलेबल, नोटिस बोर्ड, आई वुड प्रेफर डूइंग दिस, ओवर, यू अंडरस्टैंड? एक्सक्लेमेशन मार्क एंड वो सब मैं करना प्रेफर करूंगा। Right, give me the coin. Tails, we clean the shit out of the stable. Heads, we go grab something. You're pale as oaky shite. ओके, कल क्यों नहीं आया? अरे कल मेरे घर में काम चल रहा था तो इसलिए मैं कल नहीं लाया पाया। मतलब कमरा मेरा खाली नहीं था, और अभी दिन में भी खाली नहीं था, इसलिए भी आज मैं अभी आया हूँ। और मैं अच्छा है शाम को आ गया। मैं 9 बजे का टाइम नहीं रखूँगा, बहुत लेट है वो ख़राब टाइम है बहुत। अर्ली रखूँगा कि थोड़ा जल्दी आ जाए करूँ। ये एक्सक्लेमेशन वगैरह मिलते रहे ना, ये सब करने में मज़ा आता है बहुत। आई लव डूइंग दिस। इनमें लोअर होती है अपनी प्रॉपर। What happened, ma'am? As if the war weren't enough, sir. I'm losing me ends. How am I to live, eh? Get a look at the thieves? What thieves? It's monsters taking the chickens. An ordinary thief I'd nab on my own, but beasts? What am I to do? I can help you. Not for free. But you're advanced in years, so I won't ask too much. Poppycock. Not much, he says, but you'll take me liver come the end. Well, no one else is lining up to help me. Me hen started disappearing about a week past. Always take one at a time, the vermin. One at a time? Interesting. Monsters leave any tracks? Aye. Prints of wolf paws, but strange-like. As if the wolves walked on their hind legs. And don't you be like that wise-ass Yossip from down Warren. Tells me I'm mistaken, but few know beast tracks like I do. अरे कैलेंडर भाई, चैट में हो क्या? एक सवाल पूछना था आपसे, मैं भूल गया था। वो तो बताना, मैं पूछता फिर। I see. I'd still like to examine the prints myself. Wolf prints, all right. Though something's not right. Yes, please ask.
मैं पूछ रहा था आपको KCD 2 में कौन सी एंडिंग मिली थी, मतलब जो पेरेंट्स आते हैं ना, मतलब हेनरी के ड्रीम में, तो आपके में क्या क्या उन्होंने कहा था, मतलब व्हाट देयर रिएक्शन टुवर्ड्स हेनरी, ये पूछना था। आरम ने तो मुझे बता दिया था अपना, आपका मुझे याद नहीं है आपको कौन सी मिली थी, मैंने आपसे शायद पूछा नहीं था, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि मैं सबकी जानना चाहता हूँ एक बार, जिसने जिसने खेल लिया है गेम। फ्यूरी भी जब कंप्लीट करेगा तो मैं उसका भी देखूंगा। आई डोंट रिमेम्बर माई सेल्फ। अरे देखो, अगर आपकी मम्मी आप पे हेनरी के गाल छुए, हाथ पकड़े, तो इसका मतलब आपको गुड एंडिंग मिली। अगर आपके मम्मी पापा आपके हाँ मतलब छूटा ना करे लेकिन प्यार से बात करें तो उसका मतलब आपको न्यूट्रल एंडिंग मिली। लेकिन अगर वो एकदम ही मुंह उधर करके चले जाए तो इसका मतलब आपको बैड एंडिंग मिली। तो आपको अब शायद याद आया। Watch out, PG! He's got a sword! A soldier! He won't take us alive! Not gonna hurt you. Then why are you here? That captain with the black moustache send you? Don't know any captain. Followed the tracks of the hen-stealing monsters here. You're a lot of fuss over a few skinny hens. The old lady didn't like them much anyway. She were always yelling at them. And she looks like a witch. I only remember कि उन्होंने पूछा था who I want to romance, तो आपने किसको सिलेक्ट किया? Why are you in the woods? Where are your मुझसे तो उन्होंने वो भी नहीं पूछा भाई, क्योंकि मैंने एडवेंचरर सिलेक्ट किया था। We was crossing the river, but they spotted us. We ran, but Mum and Dad had bags, told us to flee. Lived in the woods alone ever since? Sure. Find a lot of things, steal a few others. We get by just fine. Where'd the wolf prints come Catherine, of course. Darwin's hunted down a wolf. Most probably neutral मिला होगा, हाँ चांस तो वही है। Catherine. Gave each of us a paw for good luck. We tied him to our shoes. 'Cause wolves steal hens, right? Sure. Usually not one at a time, though. You survive by stealing from others. This can't end well. You should ask someone for help. Yes, two big things, I agree. Take us. Once we've got all the hens, we'll go deep in the woods. Petey says we's gonna hunt. Where animal hides. So a tent out of leaves. And never grow up. Last bit's most likely. Good luck, I guess. And watch out for yourselves. भाई कैथरीन तो मतलब है भाई, रोजा अपनी औकात के बाहर है, कैथरीन औकात के अंदर भी है, मेन चीज ये है। But what about Teresa? What is it? Found a group of kids in the woods. They were the ones stealing your hens. Oh, children, eh? Riding on the backs of wolves, were they? Never any wolves here. The kids are just clever. If they've anything in their noggins, they'll stay away from me hen house now. Take them in. Give them a home. Won't steal from you then. Sure, but I'll be feeding the whelps. I gain nothing from it. But suppose I'll give it some thought. How are you faring? Yes. Nice. आजा मेरे रोज, बाबू रोज।
अरे भाई पेबल से सीख कुछ भाई, वो तुरंत आ जाता है। That's it, Roach. I don't think Henry would settle with Theresa, not because Theresa is the least attractive, but because Theresa lives in Rata and don't imagine Henry setting with Theresa. यार बट दोनों ऐसा नहीं है, मतलब थेरेसा हाँ मैं एग्री करूँगा कि अट्रैक्टिव थोड़ी कम दिखती है कंपेयर टू अदर गर्ल्स, दैट आई कैन एग्री, बट उसने हेल्प की थी ना, मेन सीन ये है, हेनरी की उसने हेल्प करी थी, तो एक वो पीओवी आता है। बड़ा अपना वो आपका भी सही है। Oi, oi, oi. भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं नोटिस बोर्ड के बाद भी। अभी ना कंप्लीट हो चुका मेरा बेस गेम का, बट मुझे लगा शायद डीएलसी का होगा। आप हेल्प के बेसिस पे जाओगे तो हेनरी शुड हैंड। अबे यार, अबे हैंस ने क्या हेल्प की, वो तो गांडू है साला। हट, उसने घंटा हेल्प की हेनरी की। हांस ने तो घंटा हेल्प की है भाई हेनरी की। खैर मैं जा रहा, खा के आया फिर बात। ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आराम से आओ। मैं भी आराम से गेम खेलना, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूंगा, नई नई चीज़ें ढूंढूंगा जो मज़ेदार लग रही। अब फालतू में हर क्वेश्चन मार्क पे नहीं घुसने वाला मैं। Pathetic. Oh, you witch fucker!
भाव क्या लगता है? The beast was, the beast is no good. Go up to any knight and shout, "The beast!" You'll smell the soiled armor at once. How might I be of service, sir? Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Feels like by investing a bit of coin, I could make the house more functional. Indeed, momentum is best maintained once established. Now that we've finished the general renovations, you might begin to consider such things as a new bed, or additional armor stands or weapon racks. Also some new furnishings, and a fresh coat of paint on the walls would do much to improve the guest quarters. Was wondering about the guest room. Not that I'm expecting company, but... Oh, but that is immaterial. All self-respecting homes should boast a comfortable guest room. What if someone were to drop by unannounced? Yeah, sooner we start on that, the better. I can tell a man of action immediately. I'll see to it myself. The room shall be ready in 2 days, in my opinion. Is there anything else you require, sir? Thinking about buying a comfortable bed. Always wanted one. Excellent idea. In your profession, rest is supremely important. But say the word, and I shall order you a bed from the carpenters who craft comfort for the court. Great. Order me a fine bed, please. Think I deserve one at my age. True indeed, true indeed. I shall send a runner at once. The bet will be in place by this time tomorrow. Is there anything else you require, sir? Could use another weapon rack. Got some interesting pieces I'd like to display. I know of a carpentry shop in town which crafts the humblest lumber into true masterpieces. You need but give the word. Fine. Order the racks. Of course, at once. At most 1 day for them to arrive, is my estimation. Is there anything else you require, sir? Along the path, I've often picked up well-crafted, beautifully ornamented armor. Some of those pieces would look great on display here. I agree. It would lend the place a certain witch's air. Shall I order new stands at once, sir? Yes. Just please make sure they're solidly made and nicely finished. It goes without saying, sir. Okay. There is nothing worse than splendid armor upon a subpar stand. By this time tomorrow, they shall be ready to display your finest finds. Is there anything else you require, sir? Feels like by investing a bit of... With the utmost respect, sir, the vineyard has arrived at the pinnacle of perfection. Any further changes could prove a regrettable step down the slope towards the brash. I firmly advise against it. Starting to get into this whole renovating thing. There must be other things we can improve. Provided we preserve the ground's Beauclervois stylings, and on condition that you are not considering something like digging vast holes in which to store monster carcasses or bury cursed treasure, I am very much in favor, sir. You know Roach, my horse? Well, we've been through a lot together. And since I've finally got a decent place to stay, I think she deserves one too. Oh, a sturdy stable testifies to a most honorable owner. Just say the word, and I'll have them start working on it at once. My Roach deserves the best. Have them refurbish the stables. I shall get to work at once. Yet finding workmen and completing construction takes time, though likely no more than 2 days. Will you be needing anything else, sir? My armor needs work from time to time. You know, oil this, reinforce that.
Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompali once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yerugan. I will contact him at once. Good. Order me up a table like that. Immediately, sir. I expect it will take at most 1 day to arrive. Will you be needing anything else, sir? So, sometimes I have to brew a potion, but I can't find the herbs I need growing anywhere nearby. Well, you're in luck, sir. The flower garden, once kept by Madame Nina, Monsieur Boleus's wife, seems the ideal place to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Good idea, Barnabas Basil. Herbs there will save me hours of painstaking searching and harvesting. The idea is yours, sir. I am but the humble executor of your will. I believe we shall have sown the first seeds in 2 days' time. Will you be needing anything else, sir? Know what? Changed my mind. Not in the mood to talk about redecoration today. But I wanted to ask you something else. I shall be glad to answer your every question, sir. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. I'm at a loss. Good day, good day. A strapping lad. A white wolf himself. Me oh my! A witch fella. Yeah. Salutations! Our trade. Patrolling on an empty stomach. Oh, dreadful. Down with their own breasts. How's it? Good day. Have your chit-chat with someone else. Talk to the commander. What is it? Put your own house in order. What's new, mon ami? Consider They yourself say that I greeted. met a fort has such extraordinary new colours. Some of the bells greetings less if he dyes their skirts. And you believe that? Go! Normally, I'd encourage you to try our famed fisherman's chowder. But alas, we are all out of crayfish. Could replace them with something else. Perch, for example. Replace crayfish with fish? I beg you. What next? Vinegar for wine? Parsley for thyme? Huh? Your nordlings are a pleasant lot,
but about cuisine you know nothing. Show me what you got in stock. Thanks. So long. Can you believe the tidings from the quarry? A cow dropped from the sky in broad daylight. It's a miracle they weren't more dead. You goats. Ophir, have you beaten her? Beg your pardon? Ow! Ooh. Drive off that sort of rapper in a snap. Aye, pigs can fly. Oh! Witch runs through the town, Oi. up the steps and down the steps, in his... पहले 38 वाला करता हूँ, ये ज्यादा हार्ड होगा। Building. Foundations probably caved in. Literally undermined. Move it! Drink! Give me a drink! Come here. Oh, here he comes. Break Alex Savag. Am I random? Are you yanking my pizzle? I hope you have, even food streams or. Greetings, Master Guard. Greetings, Master Shuk. God be with you. How's the watch going, Shuk? God be with you. How is KCD going, Shuk? Going, Shuk? Rossi, you're alright. You heard my... मैन इस गेम का बेस्ट एरिया ना मेरे लिए नोविग्राड नहीं टोसेंट ही रहेगा। नोविग्राड से ज्यादा अच्छा मुझे टोसेंट लगता है।
Ah. Enjoy. We'll stay good here. Men, with deadlines to meet. Come on now. Had I known it. What the golly blasting devils are you doing, men? What plague? An unfortunate turn of events, that's all. Get back to chiseling. If we don't deliver that head on time, the infestor will twist my... Hi भाई, रुद्राक्ष here. Hello भाई, कैसे हो? रुद्राक्ष भाई, welcome. Arms off. Greetings, Master Is God. that what you'll tell Emil's widow? That a cow crushed him and it was an accident? This, sir, is a grave matter. It requires a specialist. Some mage or warlock. What happened here? Look! It's that Witcher who's come to town. Maybe he can do something. An exorcism or the like. We should ask how much coin he'll want. Saw your notice. Got a problem with a cow? Fear a plague, is that it? Yes, indeed, and a horrid one at that. We've asked the gods something true, we have. In Zeracania, they've sent a plague of locusts, then of frogs. With us, they skipped right to raining cows down on us. Enough! Enough! No need to so panic. Come, Master Witcher, I shall divulge to you the matter at hand. Good, GTA 6. हाँ ले लिया अल्टीमेट ही ले आया इनफैक्ट भाई बस रिलीज का वेट है अब. Yes, an unfortunate matter indeed, to be crushed by a cow. A true shame, Emil. He was a good worker. I told them at once there had to be a simple explanation. But that lot, no. Right away they started in screaming, plague! Demanding higher wages for hardship, poor working conditions, you see? They'll ruin me, the blotters. My job is to figure out why a cow fell from the sky. That it? That too. The thing is, since none bothered to clear the cow corpse, some filths overrun the other pit. We fear to venture there. Not surprised. Cow, where'd it come from? What kind was it? Why, the ordinary spotted kind. Nothing unusual. Its corpse rots in the other pit, sends out its stench, and Emil lies right beneath it. Will you tend to the matter, take on the contract? What exactly is going on here? Construction of a statue of the prophet Lepiota. We're carving it. Not all at once, that is, but piece by piece. A pious infestus revived the project after years of neglect. He's engaged all nearby quarries in its completion. And we would be on schedule were it not for the incident. Please, Master, will you look into it? It's like that is like अभी ये कौन सा गाना गा रहा भाई? Need to know more about this accident. Anyone actually see what happened? No, but sounds there were. Osterv had just gone to see how Emil was getting along when suddenly we heard an ear-botching boom. Moments later, something smashed into one of the cranes. Doubt it was the cow that hit the crane. Probably true. At any rate, come morn, we ventured out to sea, but the vermin drove us off. With that, all work came to a halt. Has remained so since. Master, tarry no longer, please. Will you take on the matter? Need to talk about my reward before I decide. Ah, time for a good hackle. So how much would you take? आज तो एजेंट 40 की स्टोरी सुनी 7 के मास्टर चैनल पर रोना आ गया. आउटसाइड ट्वीकिंग बाय ड्रेक एंड ऐसा क्या रोना आ गया? What? You jest. We mine stone here, not gold. Fine. But that is the sum total. No bonuses or gratuities on top. Understood? Fine, I'll look into it.
Might Welcome be a back. botched portal, but I doubt it. Lepiota reward you with progeny aplenty. I Okay, shall भाई, keep काम an करके eye आओ. out for your return. Soot. We must get back to work soon. Immediately. Our plans were totally turned. I do what they pay me to use. That's it. भाई कुछ काम चल रहा वाईफाई के साथ, लेकिन मुझे लैपटॉप देखने से फुर्सत नहीं है, तो देखते हैं आज क्या होगा, क्या होता, क्या काम चल रहा है वाईफाई के साथ. Already started in on it. Hope they didn't muck up the tracks. पता नहीं उसकी वायर एक्चुअली कट गई रास्ते में, शायद वापस. अच्छा By the way, do you think I would enjoy hardcore experience or would I be annoyed? यार डिपेंड करता है, मतलब इंजॉय किया जा सकता है बट बहुत ज्यादा इंजॉयबल तो नहीं है मेरे हिसाब से वो, मतलब कंफर्ट छिन जाता है. Poor guy, unlucky as all hell. Right, now where do I start? कहाँ गया? यही तो हूँ. Crushed by something heavy. Skull base is cracked. Fresh tooth marks. Necrophages. But they got to him after his death. Won't learn anything else from the body. Tissues crushed in places. भाई माइनक्राफ्ट हार्डकोर करो, स्पीड इनने 5 days में डिफीट कर दी. स्पीड आईसो स्पीड ने, वैसे बोलो वेरी हार्ड टू डू इन माय ओपिनियन. हाँ भाई वो हार्डकोर मोड इज वेरी हार्ड टू डू from quite a height. in any game. Got sliced open. Not much blood, so it happened after death. Heart had already stopped pumping. Tooth marks. Small ones, though. So necrophages left him clearly. Sure sniffed out their feast fast. Deep claw wounds. Spread between talons indicates a draconid. A wyvern, probably. But these wounds weren't the cause of death. मुझे 2 weeks लगे, वो भी एक से मैंने एक बॉस मारा तो उन्होंने 4 बॉस मारे. अरे भाई मैंने सारे 10 नेगेटिव स्पर्क्स नहीं लिए, I only took 4. कौन से लिए? बताना नाम. Got it. All clear now. Cow died when it fell from a great height. Draconid must have dropped it. A youngster probably trying to get the cow back to its nest, but it proved too heavy. Emil's bad luck to be standing right underneath. And then there's the crane.
blood. Draconid must have hit it pretty hard. Dropped the cow, then probably tried to steady its flight. Got hurt in the process. Good. Should be simple to track down. Traces of Draconid blood. Barely perceptible. I'm on the right track. First one, make me sleepwalk most of the time. I sleep. Second one, makes Henry more hungry faster. Third, decreases the carry capacity by 50 and gives speed debuff when I pick for 30 seconds. When I pick for 30 seconds, matlab? Started bleeding heavily. Wound was more serious than I thought, looks like. Smells like sour mash. Draconid must have attacked a local distillery. Bastard. Not good. When I pick herbs, I would get back pain and my movement speed reduced significantly. I can't sprint. Oh, wo wali na, I know that. I know that perk. I heard about it. Landed on the roof of the distillery. Raised a ruckus, made a mess, and moved on. Paw prints. Crawled through here. Clearly too tired to fly. Was in a bad way. Barely crawling. Second Draconid landed here. A larger one. भाई वैसे आज स्कूल में फील्डिंग सेट ऐसा क्या हुआ? Together. Should be easy to track. Smaller one was still bleeding, luckily. Flew off together. Probably bound for their nest. Trail ends here. Nest's up there. I bet the farm on it. Slizzard.
trophy. Rest of the eggs haven't hatched yet. Need to burn the whole nest. अरे पढ़ता chat यार. But the biggest differ from the fourth negative, if I got branding punishment, my branding mark would become permanent. अच्छा, आज इंग्लिश का काम सबमिट करना था और इंग्लिश वाली ने ऑनलाइन मैसेज भी नहीं डाला. आज स्कूल गए पूरी क्लास में जमीन पर, आउट ऑफ द क्लास इन कॉरिडोर. पूरी क्लास. आर यू श्योर? एंड इफ यू आर कॉट डूइंग एनी मेजर क्राइम आफ्टर ब्रांडिंग देन यू आर गिवन एग्जीक्यूशन इन फर्स्ट पीरियड बाय द. आई एम श्योर पनिशमेंट से ज़्यादा लोग मजे मार रहे होंगे. सही बात है. एच नाइट भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या हाल है आपके? Now I think, now that I think of it, it could have taken one more negative perk. I could have taken. कौन सी perk आप लेने का सोच रहे थे? मतलब क्या आपको लगता है और ले सकते थे? फिर उसने बोला 7th पीरियड में कि सबकी कॉपी सबमिट होना चाहिए, तो सबके 4-5 चैप्टर इनकम्प्लीट थे. यस, पूरी क्लास. अरे कैसे टीचर है तुम्हारे यहाँ के? पूरी क्लास ही बाहर खड़ी कर दी. अरे खुद छुट्टी मार लेते अगर पढ़ानी नहीं है तो. बट ठीक है, आई ओनली वांटेड टू ट्राई हार्डकोर मोड. फिर जो लंच छोड़कर बच्चों ने काम किया वो कुछ अजीब ही था. क्या 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 काम किया? भाई ये कैसे चला रहा है? व्हाट द हेल? Faster. भाई रोज बहुत फटू है यार. Compared to KCD के Pebbles. That's it, Roach. Take it easy. Faster. बट अच्छा चैट कुछ आई नहीं. मेरे को लगा फिर कुछ चैट आई है. Well, have you learned how that cow came to fly? लॉन्च छोड़कर काम करना ना ब्रो. आई वुड नेवर. सेम ब्रदर. Yeah, you can get back to work. And it wasn't a plague of falling cows. Did I not say so from the start? A weight off my chest. So what was behind the animal's plummet? Young lizard flying over the quarry dropped it. Was trying to get it back to its nest. Food for its mother and siblings. Probably heard the last of the beasts. Burned the nest, eggs, everything. A praiseworthy precaution, but as I said, I can only pay you what we agreed. I simply haven't any more. Here, take this. And I thank you, Master.
All cleared up now, right? No gods, no plague, just the dragon, but it's gone too. We're to pay Emil's widow compensation, and that will be that. So, why do you still stand there and wait, men? Back to work! Chop, chop! And I've a notion suspicious workings are still afoot. What became of the builders who were to put the statue together? They were due 3 days back, yet there's still no sign of them at Ardeisto. They were crushed too, I'm certain of it. Or eaten, or locusts got them, like in Zerrikania. What's this rubbish you spout now? The architects wrote they would arrive a week late with a large shipment of marble from Metana for the prophet's beard. So stop flapping your yaps and get to work. Allow me to walk you away, Master. Truth be told, I lied. But I cannot have them panic again. The workers he mentioned, they've indeed vanished. Come see me later. I shall divulge to you the details. ओके किसके हार्डकोर मोड के, अरे ओके CD2 के हार्डकोर मोड की याद कर रहा. वेल मे बी आई कुड हैव टेकन नमस्कल पर्क व्हिच कुड बेसिकली रिड्यूसेस योर एक्सपीरियंस गेन बाय 50%. अरे बाप रे, भारत के सबसे बड़े बेरोजगार की एंट्री. अरे वेलकम टू द स्ट्रीम गेम कैज़म, क्या हाल है? हेलो भाई एसकेएस भाई, क्या हाल है? So, Master, the workers who vanished. How goes the search? What exactly is going on here? Construction of a statue of the prophet Lepiota. We're carving it. Not all at once, that is, but piece by piece. A pious infestus revived the project after years of neglect. He's engaged all nearby quarries in its completion. क्या डिफरेंस है हार्डकोर मोड में? अरे अबे यस केस क्या बोल, ये तो खेला भी नहीं. अरे हार्डकोर मोड में देखो, केसीडी के हार्डकोर मोड और में क्या है, देखो नॉर्मल मोड में जैसे आप मैप में होते हो ना, तो आप मैप में खुद को देख सकते हो, आपको मैप में फास्ट ट्रेवल अवेलेबल होता है, आप मार्कर वगैरह होता है. हार्डकोर मोड में देखो पहला तो बेसिक डिफरेंस ये है कि गेम आपका मैप में आपकी लोकेशन छीन लेता है. मतलब आप मैप खोल सकते हैं बट उसमें ना फास्ट ट्रेवल आएगा ना आपका लोकेशन. मतलब आपको गेम में हॉर्स चलाना ही पड़ेगा. अगर आप फास्ट ट्रेवल करना चाहते हो तो वो नहीं कर पाओगे. सेकंड चीज़ जो गेम को डिफ़िकल्ट बना देती है हार्डकोर मोड में, वो है कि आपके कॉम्बैट में जैसे एक यूआई होता है ना, जो मतलब आपको दिखाता है कि अब अटैक आने वाला है, रेडी रहना ब्लॉक करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए, या वो क्या बोलते हैं मास्टर स्ट्राइक करने के लिए. मास्टर स्ट्राइक मतलब है कि ओपोनेंट को अपोजिट डायरेक्शन से काउंटर अटैक करना है जिस टाइम पे वो आप पर अटैक करे. और मेन ये भी है कि आपको कुछ नेगेटिव पर्क्स लेने पड़ते हैं. मतलब ऐसे पर्क्स जो आपका गेम को हार्ड बनाए, आर्टिफिशियली हार्ड बनाने की थोड़ी कोशिश करें. जैसे एक पर्क है जिसमें आप अगर झुकोगे तो आपके प्लेयर के बैक में दर्द होगा. एक पर्क है जिसमें आपको भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि केसीडी में हंगर एंड स्लीप मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट करता है. और एक दो पर्क ऐसे हैं कि भाई आप सोओगे तो आप हो सकता है बेड की जगह कहीं और उठो. तो वो गेम को मतलब आपको कोई 3-4 पर्क लेने पड़ेंगे कंपलसरी, और चाहो तो आप 10 भी ले सकते हैं नेगेटिव. हार्डलेस इमर्सिव मोड़ा कह सकते हो, और उससे आधा लेकिन वो है मतलब वो. लेकिन ये है ना कि दूसरे गेम्स में जैसे क्या होता है कि जब हार्ड डिफिकल्टी खुलती है ना, तो आप क्या करते हो कि एनिमीज का हेल्थ बार ये लोग बढ़ा देते हैं कि एनिमीज का हेल्थ इतना बढ़ा दिया कि 20 हिट में वो मर रहा है. आपको 20 हिट उसको मारनी पड़ेगी, वो आपको 1 हिट में मार रहा है. इसमें ऐसा नहीं होता. एनिमीज की हेल्थ नॉर्मली है, बस गेम ज़्यादा हार्ड हो जाता है. आपका हेल्थ, आपको अपना हेल्थ बार भी नहीं दिखता ना, आपको अपना स्टेमिना दिखता है, तो आपके लिए गेम एक्चुअली मुश्किल ज़्यादा हो जाता है उस वे में. ब्रो आई प्लेड विचर 3. अच्छा आपने खेला है? कितना पूरा खेला है, मतलब DLC वगैरह? They vanished. What's that mean? Just that, along with ample supplies. I had placed an order. More than a dozen wagons reached the building site, yet 5 were lost along the way. Tools, food, building materials, and, first and foremost, the specialists we need.
the chief architect included. I wrote to the architect to say the quarry awaits. He should send new plans. But the foreman said the architect was here, at Ardaizo. And this means... He's missing too. Got it. I'll look around, see what I can learn. Master, I know not how to thank you, but I beg you to hurry. We shall simply not finish without those 5 wagons. Never, no, never would I have agreed to this work had I known it. A slizzard? Sure, 2 slizzards. Plus, one will make it 10. ना 2-3 आवर्स स्टोरी टू एंड मैं 2-3 आवर्स स्टोरी टू एंड। अरे भाई तो ये लिखना फिर रेलेवेंट है ही नहीं। आई प्लेड विचर 3 भाई ऐसे भाई कोई भी गेम तुमने अगर आधे से ज्यादा भी नहीं खेला है तो फिर ये लिखना गलत है भाई कि आई प्लेड। भाई तो आप प्लेड का मतलब क्या है कि गेम तुमने फिनिश किया है। तुम जो लिख रहे हो उसकी मीनिंग ही अलग है भाई। क्या लिख रहे हो, गलत लिख रहे। वरना भाई उस लॉजिक से तो मैंने ब्लडबॉर्न डीमन सोल्स भी खेला है। मैंने उस हिसाब से अगर मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ उसको गेम खेलना थोड़ी ड्रॉप करना है भाई। तो मैं कह रहा हूँ तुमने जैसे लिखा है ना, मतलब आई प्लेड विचर 3, वो मतलब बाहर से किसी बंदे को लगेगा कि तुमने पूरा खेला है। वो गलत है। वैसे नहीं लिखो। तो ये लिखो कि मैंने आई प्लेड विचर 3 फॉर 2-3 आवर्स ओनली। ये लिखो पूरा अच्छे से, मीनिंग चेंज हो जाती है पूरी। वरना भाई मैंने तो ब्लडबॉर्न डीमन सोल्स खेल रखा है उस हिसाब से। एंड नॉट जस्ट दैट, और भी बहुत गेम्स है जो उस हिसाब से मैंने खेल ही रखे हैं। फिर You've the look of a knight. कौन लोग हैं? You, hey, with the blades on your back. Help us. Look, What? monsters all about. I'm working here. Well, see, you're the Duke of this, the Duke of that, you're the Duke of Dog Tittle. हैं? ये क्या आवाज है? What? Butch off! I'm working here. You've the look of a knight. Over there, monsters have come. And bellies. See, you're the Duke of this, the Monster है क्या उधर कोई? Duke of Dog Tittle. Kiki more breeding ground. Gotta destroy it if they're to disappear for good. I'm going to save with my hands. What's your stone? With the beast beat down, the bells should be particularly eager to please. ओके, ये सही है। अरे वो मैप पे देख लो, विजिट द बिल्डिंग साइट जो है। सबसे पहले यही करना।
Visit the building site. चलो भाई अच्छा है सुबह हो गई Geralt of Rivia, perchance. Geralt of Rivia. Have your chit-chat with someone else. Oh, you gave those pumpkins a good reason to Geralt wiggle their bums. And verily I Just say jump unto you, like a lady. if men You can always get a new one. Impressive. Drink! Give me a drink! What? Watch off! I'm working here! What's new, handsome knight? Did you tie one on last too? भाई विचर का वर्ल्ड बहुत डार्क फैंटेसी है और फिर भी भाई इतना लाइफ फील होता है Good day. ये चीज मुझे पसंद है I do what they pay me. BC, I see. I've no time. हाँ नहीं व्यूअर्स की डिमांड थी टेकन 7 टेस्ट करो पीसी में हाँ तो ठीक है लेकिन मैं ये कह रहा था कि तुमने लिखा है ब्रो आई प्लेड विचर थी वो एक्चुअल में गलत है क्योंकि तुमने गेम कंप्लीट नहीं करा है तो वो लिखना मतलब वो हो जाएगा मतलब वो मतलब तुम मतलब पूरा लिखोगे तब समझ आएगा तुमने जैसे लिखा है ना वो फिर लोग लाया तुमने सच में खेल रखा है वो उसके लिए मैं कह रहा था एंड पीसी स्टोरेज इज लो कितना जीबी है आपके में Damn, lots of you. I lost my job! Bloody stool! Whistle! Warlock! I shall kill you! Kill you! Cannot let him get away! I lost my job! You! I'll tickle you with your own tinkling! No! To him! Shit. Damn it. हेलो मयंक भाई वेलकम पीसी स्टोरेज इज लो 512 GB नहीं थे आई प्लेड विद 2 DLC नहीं थे आई प्लेड इट कम विद 2 DLC स्टोरी slow now, let's not do anything rash. Here, help! But why even bother? Welcome What back. did they hope to steal? Hammers? A hunk of stone? I see. All right. High time I set off. It's on YT bro, don't worry. Extra reference. भाई तुम वैसे डीएम देखा है तुम्हें इंडिया की मैंने देखा डीएम वो देखा मैंने बट मैंने क्लिक नहीं किया उस पे
फायदा तो है भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट का भाई, मिले हैं सेकेंडरी को इसकी वजह से काफी। देखना भाई पूरे, अरे बाप रे ज्यादा एक्सट्रीम है। Hello. Save me, please, sir! Thank you, good sir. You would be the famous Witcher, would you not? Exactly. I shall hitch my wagon and set off for the monument works at once. They await me there. Okay. Crazy Bro, like if ahead of its time. After many you give me reply. और reply करता तो है. Smashed bones. Damn, it was strong. Deep prints. Blood. Just trying to get away.
भाई एक बार ही तो पूछा नहीं बिफोर टूट गया सीट यू डिडंट सेड ठीक है अबे भाई बस तुम लिटरली रिकॉर्ड रखते हैं इन सब चीजों का क्या यस Come out. I'm not gonna hurt you. Thank you, Sir Witcher. Let Piotr keep you in his care. भाई देखो क्या प्यारा लगता है मैं तो वैसे भी चैट में नहीं आता भाई एसकेएस अलग ही बंदा है भाई ये बंदा रिकॉर्ड रखता है भाई कौन इसकी चैट का रिप्लाई दे रहा है कौन नहीं तो गजब ही आदमी हो यार भाई स्टॉर्मीसेक ने गेम रिलीज करी कौन सी भाई वैसे मुझे बहुत बढ़िया लगा रिगार्डिंग आईजीसी क्या मैं सोच रहा डीले कर दूं एसकेएस अब एक गेम है कॉल्ड भांगड़ द अनटोल्ड स्टोरी करके फीन स्टीम डेमो राइट नाउ भाई उसके बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स ने खेला लाइक ट्रिगर्ड इंसान टोटल गेम देसी गेमर्स
The thing I liked was, बताओ, Shooker game name. Okay. Here's the cart. Wake up. Leave me in peace, Witcher. Good evening. Wake up. Excuse me, boy. Come on, get up. Hey, wake up. What? Get up. Greetings, traveler. Have you any needs? Mind if I glance at what you got? So long. Good luck on the path. The thing I liked was the developer of Vanguard Golden Phoenix 7-8 months started making it alone, and I just as I do, he literally DM me on Discord like 6 months ago to support the game when it first got Steam page. Okay. By my PC will blast after running this game. So I like that how the whole Indian gaming community supported Phoenix like crazy, और उसकी game अब viral भी चली गई, like Figured Insan की वीडियो पे 4 trending and over 1 million views in 24 hours. किस टाइप की गेम है, मतलब क्या है उस गेम में एग्जैक्ट, होता क्या है? Wake up. White Wolf of Salvatore! Saint Lebioda sent you. I must now repair my wagon. They await me at the building site. So long. Like in 22 hours. Like I played the game like 5 minutes ago when it was exporting demos in Discord. Okay. देखूंगा मैं गेम प्ले कैसा है उसका, मतलब खेल तो नहीं सकता मैं obviously, but I would definitely check it out.
हॉरर गेम है लाइक विजुअल नॉवल स्मॉल बट एस्थेटिक हॉरर गेम प्ले समथिंग लाइक स्टैनली पैराबस प्लस 50 years of Phantom. Okay, why you need a good story for your game but in India? I mean, he's my friend added on Discord. I can flex in my school with friends when the game of popular like Kamla. भाई लेकिन मैंने तो इस बार नॉन स्टोरी गेम बनाई है. बस स्टोरी गेम बनाने के लिए ना तुमको मतलब अकेला बंदा बना सकता है स्टोरी गेम, लेकिन अकेले बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है. एटलीस्ट थोड़ा कम्युनिटी टाइप सपोर्ट होना चाहिए उसके पास, बिना उसके थोड़ा वो हो जाता है. Halt! No passage! No! Count the Salvarez's orders. The area is closed. A basilisk nearby. भाई स्टोरी के लिए चाहिए थोड़ा बंदे. अकेला बंदा बना तो लेगा, लेकिन वही है थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है अकेले बंदे के लिए. Not good. Blood. Lots of it. Kikimores? Lost your nerve? Some stench. Kikimore eggs. Need to incinerate these to ash. So, missing workers. This is what became of them.
Okay. Exterminations could be so hard. Well, I've worked up watch quite where you the step. appetite. Say, do witches eat their cheese before dessert or after? Yes? What? Helped you finish the statue like you asked. Master, what would I have done without you? Countless throngs of Lepiota's followers will praise in prayer. And you'll pay me, right? But of course, your reward. The Infesta is a serious man of enterprise. Our plan foresees mass conversions. With the donations that will follow, we aim to recoup the costs of production in 3 to 5 years. Everything has been calculated, you see, down to the last decimal. Good luck then. Farewell. I've no time. Just be nimble. Stock send the whip away. Hans Capon, what a fuck shine. Ouch, my bum. Vampires. Real life. The Duchess is dead. Lamet, my friend, it's common Geralt, knowledge. I knew from the start. Now, where'd you get them catty peepers? Okay. Renovations coming along all right? I am delighted to inform you we have completed our labors. You can now devote yourself to enjoying the vineyard's delights to the fullest. You must forgive me my temerity, sir,
But I thought, with all the work on Corfo Bianco completed, and with the estate looking more beautiful than ever, it might be appropriate to commemorate the moment. Sure, why not? During the tidying that preceded the renovations, I came across a bottle of Sapramento, the 1250 vintage. I cannot say by what miracle it survived, but it is here. And we've cause to open it today. And then he ran straight into the crowd, burning bouquet in hand. All thought it a part of the performance, so they only laughed, even when the decor began to catch fire. It was not until the flames engulfed Baron Mahevkin's beard that folk began to realize something was amiss and went to put out the fires. Sounds like Monsieur Bolius and Madame Nina threw some first-rate balls here. It was so. In this regard, Baron Rossel was decidedly more reserved. So tell me, Barnabas Basil, what's the wine situation like here? Am I going to produce any this year? This year is out, I fear, sir. Last autumn, a fungus destroyed all the vines. Baron Rossel had new ones planted, but it will be some time before they start bearing fruit. Assuming that is, the fungus does not reappear. That'd be bad. This Sapramento got me dreaming. It's amazing. Isn't it, though? Allow me to top you off, sir. There. Thanks. बस और ब्रो डोंट फायर टू वॉच माय न्यू वीडियो ईथरा प्ले टेस्ट गेम प्ले. ठीक है भाई, देखूंगा. यान हैविंग अ सीजर इन बैकग्राउंड. मैंटिकोर ये मैंने मेहनत से बनाया था. ये मैंटिकोर आर्मर भाई मैं वाले कभी यूज नहीं करने वाला, लेकिन चल ठीक है. भाई कितना बढ़िया लग रहा है यार घर. स्वॉर्ड रुको, मेरे पास वेपन रैक में एक डाल देता हूँ. देखो कौन सी सबसे लोएस्ट है इनमें. यार सबसे लोएस्ट में ये आयरिसी है. द विचर 1 वाला आर्मर है वो द गेराल्ट ऑफ रिविया वाला आर्मर जो था. मैंटिकोर आर्मर. अच्छा मुझे आता क्या है, आई थिंक मैंने क्राफ्ट किया था इसमें.
हाँ वो करना पड़ता है, मिलता नहीं है गेम में। हाँ मैंने कुछ ही आर्मर्स करे थे कि मेरे को उतना पसंद नहीं आया था ग्रैंडी स्टफ, मतलब घूमना और ये करना, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर नहीं किया। Oh, finally I can sleep without meditation. सुबह 7 बजे उठना, सो जा। ओ रेगिस, ये लास्ट ईयर मुझे याद है, ये तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था इस डीएलसी में, पढ़ता हूँ। म्यूटेड जनरेटर, बढ़िया लग रहा है यार कितना घर। यार येनिफर को एनपीसी बना दिया यार। अरे सॉरी प्लीज झाड़ू लगाइए। अरे झाड़ू आपका गायब हो गया। हेलो मैम, आपका झाड़ू गया। भाई यार गेम कितना प्यारा लगता है भाई, सच बताओ। सारे एरियाज एक तरफ और टॉसेंट एक तरफ, टॉसेंट और नोविग्राड एक तरफ। इवन नोविग्राड से ज्यादा भी टॉसेंट मुझे पसंद है भाई, अलग ही वाइब है भाई टॉसेंट की, अनमैच्ड वाइब है भाई लिटरली। रुको, इधर एक नोटिस बोर्ड है तो वहाँ पे जाके पहले कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ थोड़े, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जो भी। Hey, Edgar. Are the rumors true? Are there elven ruins somewhere in the woods?
pity. आई होप न्यू एक्सपेंशन में द विचर 1 का रेवन आर्मर डाल दें। लेट्स सी भाई। वैसे इन लोगों का प्लान तो ये है ना कि सॉन्ग्स ऑफ द पास्ट में ये विचर 4 से कनेक्ट करेंगे स्टोरी को। इनका मेन प्लान तो वही है कि विचर 4 से कनेक्ट करना है अपनी स्टोरी को। पता है मेरे को तो इम्प्रेस एंडिंग मिली थी इस गेम में, और मैंने और प्ले थ्रू नहीं किया इस गेम के। ये मेरा फर्स्ट और ओनली प्ले थ्रू है। तो मेरे प्ले थ्रू में बेसिकली सीरीज जो है अभी भाई वो मतलब वो इम्प्रेस है, वो ऐसा नहीं, मतलब वो विचर नहीं है। I don't know if it will affect the songs of the past DLC. Most likely, हाँ। वो अभी एम्प्रेस है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कभी विचर नहीं बनेगी। हाँ वही बात है, मतलब उस तरह इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन वो विचर एंडिंग जो थी ना वो मतलब प्रॉपर थी कि मतलब वहीं पे डायरेक्ट वो विचर बन गई। अब मेरे में क्या है, गार्डियंस वॉर जीत गए तो टेबल टर्न वहाँ पे हो गया। बट हाउएवर आई अवॉइडेड द वर्स्ट आउटकम, जिसमें सीरी लौट के ही नहीं आती है। पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। CDPR इग्नोर करेंगे अदर एंडिंग्स को या कैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बस CDPR वाले यार ऐसे जैसे ये लोग रोल प्लेइंग गेम बनाते हैं ना, लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट देम कि वो भाई किसी एक एंडिंग को कैनन मान के चले। वो हर एंडिंग का एक लोर निकाल सकते हैं कि हर एंडिंग कैसे सेंस बनाती है विचर 4 में। सीरी बिना विचर बने भी विचर कैसे बन गई, सीरी वापस ना लौट के भी वापस कैसे आ गई, ये भी क्या करता कर दें। या पता है RPG गेम्स का असली मजा ही तब आता है ना जब कुछ कैनन ना हो, तभी फील होता है ना कि हर एक चॉइस तुम्हारी खुद की है। कैनन नॉन कैनन वाला सिस्टम में मेरे को पसंद नहीं आता। बस हर चॉइस लगनी चाहिए क्या, तुम्हारी खुद की चॉइस से सब कुछ हुआ है जो हुआ है। वो एक अलग ही फील होती पर्सनली। गेटिंग द बेस्ट एंडिंग या कैनन एंडिंग भी अच्छी फील है, लेकिन वो जो रोल प्ले के टाइम रहता है ना कि हाँ तुम्हारा वर्जन में, तुम्हारे वर्जन में कैरेक्टर ऐसा था, मेरे वर्जन में वैसा, तो वो अलग ही है। दैट कांट बी रिप्लेस्ड। Keep calm. Start no brawl. A witch. That Gwent will be the end of me. Drop here, taking a bath. Yeah? What is it? Now, why does one summon a witcher, To inquire about the gossip currently flowing about the court? I have a problem with a beast. Ah, you the one posted the notice? Go on then, spit it out. What's it about? First, my dear Witcher, we must establish ground rules. Given the vast difference in our respective social positions, I'm sorry to say I take umbrage at the familiar tone you take. I expect deference. I expect you to address me as Sir, or better yet, as Monsieur de Bourbeau. Fine. Monsieur de Bourbeau. The emphasis falls on the last syllable. Bourbeau? Mm-hmm. अरे See, now गांडू I'd तो rather बता अपना emphasize काम something पहले। else. Tell me what this is about, monsieur, or I'll change my mind and go. Nordlings and their manners. Very well. Let us get this over with. Something has infested my vineyard. Mm-hmm. Great. Let me go prepare my something oil then. I beg your pardon? Need more information than that. Where was this something seen? Any witnesses? Bodies to examine? Therein lies the rub. None has seen the beast. We've only heard signs of its presence, a strange scratching and shrieks. Neither are there any corpses to inspect. Men simply disappear without a trace. Who's disappeared, if you don't mind my asking? Most recently some farmhand, I believe. Despite the vast difference in your social statuses, do you perchance remember the farmhand's name, monsieur? No.
You must speak to my wife. She has more collegial relations with this household help. She's away at the moment visiting her mother, but should return forthwith. Noises you mentioned. Where do they come from? Well, everywhere. But they're most clearly audible in the wine cellar. Means the monster must dwell underground. When are the noises loudest? In the night, just as they were years ago, when the buildings quaked. Another expert agreed to look into the matter then, but was never thereafter seen nor heard of. Oh, that should suffice with the questions. Now tell me, will you take the contract? Yay or nay? Depends. What kind of reward are we talking about? अरे बेटा तेरा को खानदान के सारे पैसे उड़ा दूंगा मैं. How much? Do you jest? 500 ले लेता. मैं having 600. Come now, be reasonable. Fine. Seems I must take the loss. Agreed. Fine, I'll do it. Need to look around here first. Then I'll want to talk to Madame de Bourbeau. Very well. I shall inform you once she has returned. Meanwhile, the key to the cellar. Just... whatever you do, please do not disturb the wine barrels. Okay. My hand shakes so bad, I cannot hold my tools. It's quiet. Guess the monster actually is nocturnal. Gotta wait till dark. Let's look around. Rats. Not known to kidnap farmhands. What the? Shattered dishes. Shelf somehow. Shaken off, maybe? The tunnel? Can finally see something. Kicking worse?
थैंक यू भाई गेराल्ड बताने के लिए कि लगता है वो। बहन की लोड़े Getting more interesting by the minute. भाई क्या सरवाइव किया है? No kicking more dug this. Tunnels are the work of something much bigger. Something with heavy claws. No kicking more dug this. Tunnels are the work of something much bigger. Something with heavy, wide claws. Kicking more eggs. Should destroy them before the young hatch. Start prowling the vineyard. Damn it. Young could hatch any minute. Damn it. Young could hatch any minute. Young could hatch any minute. Cracked Kikimore eggs. Something's been feeding on them. Water coursing. Underground stream. Monster I'm looking for lives underground, digs tunnels, feeds on Kikimores. It is big. Very big. Won't learn anything else here. Time to go back to the surface. Sacre bleu! What is the meaning of this? I'm paying you to slay a monster, not demolish my property. Property's falling apart on its own, what with all the tunnels under it. I'd fill those in soon if you don't want your building to collapse. Tunnels? Fiddle my farm, how did tunnels appear down there? Something dug 'em. A large creature. Also killed a few Kikimores down there. They'd managed to lay eggs already. Consider it a half-favor. Won't cost you much. Did you exterminate them all? Did you burn the eggs? Thought not. I'll not pay you a copper. I must send men down there to deal with the filth as it should be dealt with. Madame de Bourbeau, I presume? Hear you know something about the missing farmhand. Jean-Luc? Yes.
We went to examine this year's seedlings. Something had been nibbling at them. Then we heard these odd noises. Jean-Luc went to reconnoiter and never returned. Madame, could you describe Jean-Luc? Tall, exceedingly well built. Hair black as pitch. Dear, concentrate. There is not a peasant that is not well built. They work in the fields all day. Do you mean scars, birthmarks, that sort of thing? Then none, I suppose. But he did wear a pendant around his neck. A silver one. Silver jewelry on a farmhand? It was a gift, I believe. Or that is what he claimed. Should be enough to go on. Then what are you fritting round here for? Get to work! Please, find Jean-Luc. Perhaps I can turn it into an extended salad. Be gone from my sight! Vampires attack the city. Blanket was laid out here. Bread's really stale. Been here a while. Footprints. 2 sets. Felled trees, as if something rolled over them. So is Shaelmar. Only they dig tunnels and move like that. Large, deep tracks. To that cave. I wonder what lured the giant centipedes. Trail leads to that cave. The giant centipedes.
भाई जरूरी था भाई रिप्लेनिश करना। Claw marks. Straight, dull, perfect for digging. Shaelmar's close. Shaelmar droppings. Grubs that feed on them are a delicacy to giant. राम राम। आज जल्दी चालू कर दी स्ट्रीम भाई। आप थोड़ा जल्दी कर दिया करूँगा भाई, बहुत लेट नाइट करता हूँ तो भाई देखो दो नुकसान होते हैं। मेरी स्लीप का भी नुकसान होता है, दूसरा वैसे भी रात के टाइम तक कोई देखता भी नहीं। अभी कम से कम लोग थोड़ा बहुत देखने भी आ जाते, ज़्यादा टाइम रहता है। लेट नाइट मेरे लिए सूटेबल नहीं है सर। हेलो गेम किंग, वेलकम। Shaelmar's lair, gotta be. Tracks its victims here. Pretty fresh, some of them. Gonna have to brew some bait. Need the blood of a recent victim and some of the mushrooms that grow here. Fresh corpse. Must be Jean-Luc. Crushed ribs, cracked skull. Shaelmar did this. No two ways about it. Highly decayed, partly eaten. Been lying here a while. BCS खत्म किया, कैसा लगा भाई? हाँ फिर घर वाले भी सुनाते होंगे भाई। वो भी है यार, वो भी कहते हैं कि तुम गलत टाइम, तुम्हारा टाइमिंग खराब है। कम से कम सही हो गया है ना, तो अच्छा है। BCS बेटर कॉल सोल। Spill it within the lair, somewhere near an air current, so the scent spreads throughout the cave. Ugh, that stench. Spread from here. Need to spill the bait nearer the tunnel entrance. पीक सीरीज, यस। कैसे है ये चुड़ैल थी? मस्त है यार, मैं मस्त कॉन्ट्रैक्ट्स मार रहा हूँ DLC के। स्टिल डिडंट वॉन एनिमी, या मैन। भाई कैसा लगा लालो सलामांका? लालो एंड नाचो मुझे बेस्ट कैरेक्टर लगे भाई उस शो के। मतलब ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स में भाई, ब्रेकिंग बैड के बिना भी इतना तगड़ा माल मिल गया। विंस गिलिगन भाई गोट है। Gen 1 लालो एंड नाचो आर का गोटेड। भाई पता है 2009 में ब्रेकिंग बैड का एक एपिसोड निकला था सीजन 2 का। उसमें जब वॉल्टर और जेसी पिंकमैन वो सोल को किडनैप कर लेते हैं ना, और डेजर्ट के सामने लाके खड़ा रख देते हैं, मतलब वो एक ओपन ग्रेव में डेजर्ट में। तो भाई वो बोलता है, चिल्लाता है ना, डू यू इट वॉजंट मी, इट वॉज इग्नाशियो, ही इज द वन, डिड लालो सेंट यू, नो लालो। तो भाई उन लोगों ने ना 2009 में ही 2 रैंडम कैरेक्टर्स का नाम लिख दिया था। ऐसे ही 2 रैंडम कैरेक्टर्स का नाम उन्होंने 2009 में लिया, और 2022 आते आते उन्होंने उन 2 कैरेक्टर्स की प्रॉपर बैक स्टोरी बना दी विदाउट एनी कंटिन्यूटी एरर। भाई कोई नहीं कर पाता ऐसा भाई, उन लोगों ने अपने आप मतलब कर दिया भाई। ऐसा भी नहीं कि बेटर कॉल सोल पहले आया है, ब्रेकिंग बैड पहले आया, लेकिन उन लोगों ने बेटर कॉल सोल की स्टोरी एकदम ब्रेकिंग बैड के हिसाब से बना दी। लालो एक्सप्रेशन
लालो इनसे भाई, लालो बहुत डेंजरस है भाई। अगर लालो जिंदा होता ना तो ब्रेकिंग बैड कुछ अलग ही लेवल सीरीज होती। वो सबसे बड़ा डेंजर होता भाई। गस फ्रिंग वगैरह तक की फटती है भाई लालो से। वो ऐसा ही जनता बहुत डेंजरस था। Now IT is tough for newcomers like me. Bye. It was always tough from last few years. हॉवर्ड के साथ बुरा हुआ बेचारा फ्री में भाई। उसकी किस्मत ही खराब थी भाई। उसकी कोई गलती नहीं थी भाई। ना उसने क्रिमिनल था ना कुछ, बस वो गलत टाइम पे गलत जगह पे था। दैट्स इट। वो भी उसकी गलती नहीं थी। अरे गांडू है क्या ये? ओके प्योर आर्टिस्ट था। राइटर से कंफर्म किया था। हावर्ड हसन में बोलने वाला था नो नीड टू हर्ट देम। हाँ पता है मुझे। अब कौन सा नेक्स्ट गेम खेलोगे? अभी तो ये थोड़ा दिन ऐसे ही टाइम पास करूंगा इसमें। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं सारा मैप क्लियर ही कर दूंगा, नहीं होने वाला है। बहुत बहुत बड़ा है और मज़ा नहीं आएगा। बहुत चीज़ें रेपिटेटिव है। सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा हूँ। फिर GTA Vice City खेलूंगा जहाँ तक है। Practice was the white couldn't have done it without me. Yes. और सुनाओ व्हाट द फक भाई, ये एफजीओ की तरह तुम भी लिखने लग गए। इसको देख के हॉगवर्ट्स लेगेसी याद आ गई। अच्छा अब तो टेस्ट मैच भी नहीं हो रहे। होगा तो 15 से श्रीलंका के खिलाफ है। बट ले वेलकम बाय मिस्टर पैरासाइट।
क्या गांडू आज बहुत है यार, इससे ज़्यादा गांडू मैं जिंदगी में नहीं देखा। एल्डन रिंग का बहुत ही शर्मा है इसके सामने, सारा उनसे ज़्यादा डिफिकल्टी है। What is this garbage boss, man? Hut! Just gotta chop off its head and go get my reward. बाप रे भाई, क्या बवाल आइटम था भाई ये। What is this garbage? Absolute कूड़ा बॉस भाई। और मेरी इन्वेंट्री हो गई भाई, फुल हो गई। थोड़ा वो करो, आइटम ड्रॉप। ग्रेट बॉस। हाँ मतलब मजा तो आया लड़ने में, ये नहीं कहूँगा खराब है भाई। अगर मैं इससे 1 साल पहले लड़ता ना तो शायद मैं एनॉय होके ड्रॉप मार देता। ये मतलब ड्रॉप नहीं मारता लेकिन एनॉय जरूर हो जाता। मैंने एक चीज नोटिस किया यार, लास्ट कुछ मंथ्स में मेरा बिहेवियर गेमिंग को लेके चेंज हुआ है बहुत। मैं थोड़ा एनॉय जल्दी नहीं होता। कौन है भाई? गैराल्ट को लग रहा है भाई कोई एनिमी है तो ये स्लाइड मार रहा है। Faster. Bread at the sprinklers. Watch my mouth. Vampires. See, no, the Duke of this, the Duke of that, no, the Duke of this. I work from dawn to dusk's last light. Then give my wife a good night. अब एक्चुअली नीचे जाने का रास्ता नहीं समझ आता।
It's clearing up. अरे कहाँ है गांडू? ऊपर आ भोसड़ी के चूतिए। मेरा अवार्ड कब देगा? Keep calm. Start no pros. Monsieur de Bourbeau, can we talk? You'd best be bearing good news. By the way, Get on with what it. do you think? किसके बारे में? Got rid of the beast that was giving you trouble. It was a Shelmar. Shelmar? What improvements CDPR can make in? अभी बताता हूँ एक. Who could that be? Kinda like a cross between a mole and a caterpillar. Just big as a barn. Uh-huh. Well, Master Witcher, you make a poor first impression, but ultimately proved your worth. There. Your reward. As for Jean-Luc, afraid he's dead. Sorry. Who? Oh, him. Trivial as losses go. I shall soon find another to take his place. Right. After all, he is just a peasant. Not a monsieur de blah blue blah. So long. Folks say some large armors हाँ, अब बताता. First of all, in my opinion, Witcher 4 में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो है कि भाई देखो, इन लोगों ने ना काफ़ी अलग अलग गेम डेवलपर्स को हायर करा है अपने नेक्स्ट गेम के लिए. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये लोग अपने नेक्स्ट गेम में पहले तो केसीडी की तरह ना वो कर दें, एक क्या बोलते हैं, एनपीसीज को थोड़ा वो कर दें यार, केसीडी लेवल के एनपीसी बना दे गेम में. आई डोंट नो करेंगे कि नहीं, बट थोड़ा होता है एनपीसी में जान डाल दे गेम में. लेकिन हाँ, ये नहीं है कि एनपीसी में जान डालती तो गैराल्ट उनको मर्डर कर दे. मतलब गैराल्ट को वैसा ही रखें, सॉरी गैराल्ट बोल रहा हूँ, सीरी उनका मर्डर कर दे. नहीं, सीरी को नॉर्मली रखें, हेनरी की तरह वो ना बनाए ओपन एंडेड कि वो कर मार सकता है ये वो. बट थोड़ा एनपीसीज को अपनी एक पर्सनैलिटी दो रैदर देन वो कि वो एक जेनरिक क्लोन की तरह ही बस चलते हैं. मतलब उनका एक अपना रूटीन डाल दें, थोड़ा और अच्छा लगेगा वो वर्ल्ड. ऑल्दो मैं समझता हूँ कि वो विचर का वर्ल्ड वैसा ग्राउंडेड वर्ल्ड नहीं है उतना, बट फिर भी. बट हाँ, मैं विचर 4 के लिए एक चीज़ कहूँगा ना कि इट डजेंट नीड टाइम्ड क्वेस्ट एट ऑल. मेरे हिसाब से विचर जैसे गेम में टाइम्ड क्वेस्ट तो नहीं होनी चाहिए जैसे कि केसीडी में है, क्योंकि विचर इज अ गेम जो वो फैंटेसी गेम है, तो उसमें दे डोंट नीड टू डू दैट. डिड यू फाइंड द डिटेल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू डिडंट रिपोर्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट गिवर? मैंने क्या बोलते हैं, डिड यू फाइंड द डिटेल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू डिडंट रिपोर्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट गिवर? मैंने तो भाई इसी को तो किया है, यही तो था ना. ये इसका जो भी अजीब सा नाम है, तो गैराल्ड भी लेने से वो हो रहा था. ये कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब मैंने नोटिस बोर्ड से उठाया था और बाद में मैं यहाँ पर आया था, इसने दिया था, बताया है मॉन्स्टर के बारे में. वो बाकी एनपीसी वगैरह होने चाहिए. बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि केसीडी की तरह फूड और स्लीप डाल दो, क्योंकि एक फैंटेसी गेम में ना फूड और स्लीप का जो फीचर है ना वो बहुत वो इमर्जन ब्रेक कर देगा. रियलिस्टिक जॉनर में वो चीज़ काम करती है अच्छे से, बट फैंटेसी जॉनर में इट्स नॉट नीडेड एट ऑल. मैं लेकिन ये कहूँगा थोड़ा ओपन वर्ल्ड और ज़्यादा वो बनाओ, मतलब एनपीसी थोड़े लगने चाहिए और रियल फील होने चाहिए रादर दैन जेनेरिक क्लोन्स. So you didn't found the hidden detail? ना, I didn't. भाई थोड़ा बताओ, आप ही बताओ. No pros. Good day. Our business. Adieu, sir. Our business. Adieu, sir.
So remember, Garrett fortune the casualty of the server that the very fucking server was fucking the rich guy's wife, and if you want you can report this fact to the guy. अच्छा वो रिंग इसीलिए मिली थी उसकी डेड बॉडी पे गोल्ड वो. What's new, handsome knight? Our business. Adieu, sir. And he would then kick out his wife from the house. अच्छा एंडलेस पॉसिबिलिटी भाई. अब तो मैं सरप्राइज भी नहीं हूँ विचर में इतनी एंडलेस पॉसिबिलिटी. आई बिलीव विचर से ज्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटी इस दुनिया के किसी गेम में नहीं हो सकती. Either accept it or you die. How's it? Salutations. Our business. Adieu, sir. Keep calm. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसकी वाइफ के पास पहले जाना पड़ेगा. Or you could secretly talk to Zard and give back the ring. अच्छा. मैंने क्या किया ना, मैंने डायरेक्ट उससे मेन वाला बात कर दी. मैंने उसको ये सब नहीं बताया. मैं अपना काम करने आया था. कॉन्ट्रैक्ट का मेरे को इसके सर्वेंट वर्मेंट ये सब से मतलब ही नहीं. आज तेरी ऐसी की तैसी. Witcher definitely has a very deep lore. आज रहा है टॉयलेट करके. I think there should be a timed quest in future Witcher game, or my definition of time best is if you do some other quest and then the first quest is just like if you don't do the side quest near Sigismund camp, it will fail the main story progress. And this type of quest also. हाँ तो वो तो ऑलरेडी है भाई इस टाइप की. मेरी जो कुछ फेल्ड क्वेस्ट है ना, मेरी जो कुछ फेल्ड क्वेस्ट है, हाँ इन सब में यही चीज तो कॉमन है. ये सारी फेल इसीलिए हुई हैं. मैंने भाई सेकेंडरी क्वेस्ट पे ही फोकस था मैं, तो इनमें से कुछ ही फेल हो गई, या कुछ मैं थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर लिया था स्टार्टिंग स्ट्रीम में ही तभी.
ये तो इसमें कुछ नहीं, मतलब है तो ऑलरेडी। मेरा टाइम्ड से मतलब था कि इन गेम टाइमर, विचर डजंट नीड इन गेम टाइमर। आई मीन मैं चाहूँगा कुछ जगहों पे एटलीस्ट विचर अपनी ओरिजिनलिटी पे ही स्टिक रहे। And I believe there should be some quest mechanics related to a timing. For example, there is one contract where the contract giver tells Gerard that he would give Gerard the reward after a week and you could skip 7 days for the reward. हाँ वो तो है, I know that. मैं तो उसके बगल में बैठ के वो मेडिटेट करके ही टाइम स्किप मार देता था, सिंपल। Yes? That young countess, Isabella Marides, they say she tags maids down to the shadows by scraping the maid. Geralt of Rivia, slayer of the beast, I am in your debt. Eagle than a quail. Yes, I should, if I only could. The guard brings peace to our domains. Flout its writ and rot in chains. Foul magic worked by the daughter's troops, all on account of him being refused her hand. I did the same too because I wanted to test if that works. I don't think CFU should copy paste every mechanic from KCD2, but नहीं, हर कुछ तो नहीं करना इसकी जरूरत है यार। देखो विचर की अपनी ओरिजिनलिटी है भाई, दे डोंट नीड टू लूज दैट भाई, दे डोंट हैव टू लूज दैट। उनका फोकस अपने गेम को इंटरेस्टिंग बनाने पे होना चाहिए rather than कॉपिंग। वो मजा नहीं आएगा भाई अगर उन लोगों ने सब कुछ कॉपी ही मार दिया तो। Some mechanics would like a companion like Mutt. यार companion I think भाई हाँ आइडिया अच्छा है। एक मैजिकल कंपेनियन दे सकते हैं, मतलब सीरी चुट की बजाय तो एक डॉग टाइप का मतलब डॉग वगैरह, अच्छा मतलब मैजिकल डॉग या कुछ अपीयर होके एनिमीज को काट रहा हो, या मैजिकल वुल्फ हो एज अ कंपेनियन और वो काट रहा हो, फिर वो चुटकी दोबारा बजाए और वो गायब हो जाए, ऐसा कर सकती। I mean a companion could do anything but not necessarily it could be a monster too। हाँ मतलब एक वुल्फ भी हो सकता है, मॉन्स्टर भी हो सकता है, या हो सकता है सीरी खुद हम लोग स्टोरी में खुद अनलॉक कर सके कुछ क्वेस्ट वगैरह करके, कि मान लो कोई मॉन्स्टर है जिससे हमारी दोस्ती बन जाए और फिर बाद में हमारा वो परमानेंट पार्टनर बन जाए स्टोरी में, हम लोग उसको अपने साथ रख सकते हैं। मतलब वो अपीयर तभी होगा जब हमें उसकी ज़रूरत है और वो हमारी हेल्प करता रहेगा। बहुत अच्छा मैकेनिक होगा वो और गेम को और फन बनाएगा वो। डेफिनेटली भाई आई एग्री विद दैट। और भाई इन लोगों ने बहुत डिटेल इस गेम में डाली है, बट
एक जो सेटबैक है ना मेरे हिसाब से इस गेम में वो ये है कि जो अनडिस्कवर्ड लोकेशन वाली चीज़ है ना वो बहुत जेनेरिक है भाई, बहुत जेनेरिक है। वैसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं वैसे। इन लोगों ने गेम भले ही चाहते थे कि हर कोई खेले, लेकिन फिर भी भाई इट्स वे टू जेनेरिक इन माई ओपिनियन। It could be monster. बाकी I don't think there should be stealth. ना ना कभी नहीं, कभी नहीं. Not even in 100 million years. Not even in a million years they should add stealth mechanics in Witcher. By Witcher is not about stealth. By Witcher, but in fantasy game में stealth बहुत घटिया. It's the worst thing you can imagine. बिल्कुल नहीं. stealth तो नहीं होना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. विचर फैंटेसी गेम है, वो मॉन्स्टर हंट करने में मजा आता है, मारने में मजा आता है खुल के। हेनरी इंसान है तो इट्स मेक सेंस व्हाई इज डूइंग स्टेल्थ। केसरी के यूनिवर्स में मेक सेंस टू डू स्टेल्थ। नो नॉट एट ऑल इट्स देयर। बाकी आई एग्री विथ योर टेक कि इस पे नहीं होना चाहिए स्टेल्थ। बाकी और भी फीचर्स मेरे हिसाब से हैं जो नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने ईटिंग और स्लीपिंग बता दिया कि नो मैटर वो लोग विचर को कितना भी डिटेल में आने की कोशिश करें, दे डोंट हैव टू ऐड रियलिज्म इन इट। विचर का एक फैंटेसी है और उसे एक फैंटेसी की तरह रखना चाहिए, उसको उसमें रियलिज्म ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेप्थ इन्हें बढ़ानी ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन दे डोंट हैव टू ऐड रियलिज्म इन दैट। विदाउट रियलिज्म चल जाएगा। You're not growing any younger, Gramus. You must pass your knowledge on. I'm no trout that must get to its spawning ground. I shall do what I please. Now leave me be. Witcher? Underground Ivy leaves a bitney. Want to talk to you. But I do not wish to speak. Leave. You distress me. You seem a nice enough guy. Well, I'm not. I plan never to be. I became a druid to avoid others, to not have to deal with them, not to smile when I don't wish to feign compassion when someone's travails matter less to me than a pair of birch cones. So I shall be straight. Get out of my sight, before something, I know not what, deprives you of yours. I want you to share your knowledge. Teach me alchemy. You? My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if they'll share Spickerog with you? I'm serious. That's so. Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply portray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply. I'd be a good student. Doubtful. You can't even grasp the simple notion that I want you to leave. One of the fun realistic thing they could add is making alchemy realistic. You mean like Kingdom Come? मतलब केसीडी की तरह ही alchemy आप चाहते हो कर दें? यार पता है मैं to be honest केसीडी में भी alchemy का फैन नहीं हूँ, एंड विचर में तो आई डोंट थिंक कि मैं उसका फैन बनूंगा भाई। मतलब एक फैंटेसी यूनिवर्स में ना मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्लोबन चीज़ें लोग ऐड करें। वो स्लोबन प्रोडक्ट जो है ना केसीडी का, वो केसीडी के लिए ही सही है, वो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए ही सही है। केसीडी के वर्ल्ड में ना मॉन्स्टर है, ना ड्रैगन है, ना मैजिक है, ना पत्थर उड़ जाता है, ना भाई एकदम से मतलब दुनिया हिलने लगती है।
सब कुछ अपना नॉर्मल पेस पे चलता है। केसीडी की दुनिया में अगर कोई बहुत बड़ा थ्रेट है तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है अपने सामने, दैट्स इट। वही चीज़ उस गेम को मतलब रियलिज्म को फन बनाती है वहाँ पे, कि विचर जैसे गेम में जहाँ तुम्हें मॉन्स्टर्स और वो डरावने क्रिएचर्स से लड़ना है ना, वहाँ पे नहीं चाहिए सब। Like in Witcher 2, Geralt couldn't make a drink of potion during combat. Like you have to prepare potion and drink it before combat. The effects of potion in Witcher 2 was longer than Witcher 3. अच्छा, या फिर भी मैं कहूँगा I don't think so. Alchemy is integral part of Witcher. It is. But I still believe कि in a fantasy universe it doesn't have to be that depthful. भाई देखो, उन लोगों ने वैसे भी जो डिज़ाइनर हायर किया है ना विचर में, उन लोगों ने केसीडी का वो क्वेस्ट डिज़ाइनर ही हायर किया है। तो उनका मेन जो है ना वो आई थिंक क्वेस्ट पे ही वो क्वेस्ट जो है ना विचर की, वो उसको और ज़्यादा टाइट बनाने पे फोकस करेगा कंपेयर टू ये एक्स्ट्रा मैकेनिक्स ऑफ फ्रॉम केसीडी। ये मैं मान के चल रहा हूँ, वो उसका मेन फोकस वही होगा। Preparing to perform a rather tricky ritual, so I could use some help. Even yours. I require 3 favors. Do them for me, and I shall accept you as my apprentice. Well, there's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Muskogan forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Finally, convince Fridtjof to help me perform the rite. He's a druid like I am. You'll find him near Blandara. I believe he's there on a matter of some import. So, what will it be? This Fridtjof, who is he? The Vadermaker, huh? अरे पढ़ता चैट। You don't know the word, do you? And I pledge to make you my apprentice. A Vadermaker is a druid who can manipulate the weather, stop a storm, cause hail, make lightning and turn your enemy to ash. I advise to address him with the utmost respect, if you value your life. Spirit. Why do you need that? As you must know, potential apprentice, alcohol is the base for all potions. भाई विचर केसीडी का क्वेश्चन है विचर 3 से इंस्पायर है, वो भी बात सही है। बट भाई केसीडी में तुम्हें एक चीज़ है ना, जैसे वो क्वेस्ट डिज़ाइन कर रहे तो मुझे लग रहा है शायद विचर में वो लोग स्पीच चेक देने वाले हैं। मे बी वो लोग स्पीच चेक वाली चीज़ डाल देंगे कि मतलब हम सीरी का स्पीच चेक हाई लो होना चाहिए सामने कन्विंस करने के लिए, रादर देन जस्ट तुमने ये चीज़ बोल दी और सामने वाला मान गया, ये तुम्हारा स्टोरी हो गई। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ विचर 2 वॉज ब्रांचिंग स्टोरी लाइन। हाँ, आपने बताया था ना कि उसमें आपको 2 प्ले थ्रू करने पड़ते हैं एक्चुअल में अच्छे से उस गेम को एक्सपीरियंस करने के लिए। इफ दे कुड रिक्रिएट समथिंग सिमिलर, इफ दे कुड रिक्रिएट समथिंग लाइक दैट, देन भाई मेरे को 2 स्ट्रीम्स, मेरी चैनल की सबसे बड़ी स्ट्रीम हो जाएगी, क्योंकि मुझे 2 प्ले थ्रू करने पड़ेंगे उस गेम के। Superior alcohol means a higher quality potion. This spirit has no equal. Its strength, its flavor. Unfortunately, the distillery atop Hale Hill has fallen into disrepair. We've lacked a source ever since. But you'll manage somehow, won't you? You're so confident. Pimpernel. As far as I know, it's got no use in alchemy apart पर from... मुझे लगता नहीं वो होगा जो आप कह रहे हो। आपका आइडिया होगा अपनी जगह सही। But the one that grows in the Muskogan But forest. I believe so. If the rumors are true, a creature jealously guards all the herbs growing there. Forest Welcome creature back, jealously Tom. guarding some secrets? Sounds familiar. All right, I'll do it. But this ritual you want to perform, what's that about? If you wish to be my apprentice, you must stop asking questions. I decide what to tell you and when to do it. Now go, chop chop, before I change my mind.
Anyways, बोल भाई. Guys who have PC, please play my game on 15 August and don't play it if you are a Desdrohi. Okay, bye. भाई तेरा गेम पीसी पे ही आ रहा है यार, वही तो दिक्कत है बस. मोबाइल पे आ रहा है क्या तुम्हारा गेम? अगर मोबाइल पे दे रहे हो तो मैं ट्राई मारूंगा ऑफलाइन. Maybe I make it for mobile too. Okay. Pollen on the leaves still. Someone picked the bloom recently. Another seeker of Pimpernel. Another? Gremist has sent countless young druids into the forest. They emerge drained, with a blank stare, and with no flower. And they never speak of what happened. I've asked Gremist to stop the folly. He looked at me and laughed. But the fun's over. One of our novices, Ramond, has failed to return. I've come to find him, alive or dead. What do you know about this forest? Not much. Funny, isn't it? A druid should know every tree, every bush. But even we know not to venture to some parts of the isle. You can subdue animals, but not monsters. And the word is, one has made its lair here. A Leshen? An Axabrum? Sadly, I don't know. As I said, those who have entered do not speak of who or what they saw. Listen, you're looking for a druid, I'm looking for a flower. Let's go in together. Why not? I could use the help of a tracker. Lead the way. Flower. And of course my game is free, you can donate me though. Okay, okay. One funny thing from KCD they could use is add a Rata and Kutenbuck tone. हाँ, उन लोगों मैंने एक्चुअली इस गेम में कुछ क्वेस्ट में दिया हुआ है, जैसे मुक्का उक्का मारता है ना गेराल्ट जाके एनिमीज को, मतलब पंच करता है, लेकिन वो मतलब रेपिटेटिव नहीं है वैसा, वो मतलब सिर्फ क्वेस्ट का पार्ट है, वो बस दिक्कत है. No petals. Hoofprints, but a biped's. The glory you attain shall never perish.
What a grotesque creature. Oh, come on. Oh, no. Oh, stop, please. Ha. Oh, this is great. No, stop. Please. Stop it, that tickles. Are na. Two can play this game, you horny. कर देता रेज्यूम छोड़. I don't see any reason to kill her. She's a monster, sure, but a sentient one, and basically harmless. No such thing. Just as there's no dry water, no cold fire. But if you'll not help, very well. I shall tend to her myself. I'd advise against it. I will return, with one who does not carry a sword for show. Why did ये you क्या take my randomly? side? I'm afraid you'll be sorely ये disappointed. इस वजह से. I don't generally couple with witches, especially not out of gratitude. Tell me why not. Is it the scars? I detest when a man smells of blood. You witches always reek of it. Fiend blood, trot blood, and these are my brethren. You're right. But unlike fiends and chorts, you... Have ample breasts and a pretty face. I know. Their lack of these attributes, is that what makes them easy to kill? It's a bit more complicated than that. But never mind. No means no, I get it. Can't think of another way you can repay me. I'm looking for Pimpernel. You know this forest. Maybe you could help me. I shall take you myself. And you, Rammond, go pick some more violets. Just the indigo ones this time. Indigo? बैंड जो डर लगता है ना, ये लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बैंड. Indigo is indigo. Men. मुझे रिस्ट्रिक्शन से भी डर नहीं. मुझे को इस चीज का रहता है ना, कहीं साले हटाने दे बैंड जो स्ट्रीम मेरी उड़ाना दे. पता नहीं कुछ लोगों की उड़ जाती है, कुछ लोग बोलते मेरी स्ट्रीम उड़ गई इस वजह से. मैं वो डर लगता है मुझे दिमाग में. वो नहीं चाहता मैं भाई कि सारा स्ट्रीम उड़ जाए मेरी. आई मीन रिस्ट्रिक्ट कर दो, मेरी मोनेटाइजेशन छीन लो, मुझे घंटा मतलब नहीं. पर स्ट्रीम मत उड़ाओ भाई. आई डू द स्ट्रीम बिकॉज आई केयर. Because I care about talking to people. Zero filter आ गए. By the way on TV. तुमको फिर से दिखाऊं क्या? देखना है तुम्हें फिर से?
ये देखो 1 साल पहले का, जिस दिन मैंने गेम स्टार्ट किया था, तो वहाँ का ले सेव है। It was so nice I had to do it twice. लगा दो क्या फिर से? कंटेंट रिस्की ना हो जाए यार। अगर YouTube ने मेरी स्ट्रीम उड़ाई ना, मादर चोद है प्लेटफॉर्म फिर। पता नहीं कई लोगों की उड़ती जाती, मेरी यार लास्ट में नहीं उड़ी थी, उड़नी नहीं चाहिए। मेरी भी कभी नहीं उड़ी, लेकिन सब देख लो, स्ट्रीम का चक्कर ना आना चाहिए। सुबह GCN का क्यू 5 मिनट में हो जाता है था, और अभी भी क्या हो गया? क्या दिक्कत आ रही? Why you need all these flowers? Nosy, aren't you? Wait and see. भाई मेरे को डर लग रहा है, करेंगे लोग। Some fresh, others faded, all leading in the same direction. मैं 8 बजे से GFN लाइन में हूँ। अच्छा, व्हाट इज GFN? पहले ये बताओ। भाई कान्ये वेस्ट की वीडियो में तो रियाना एंड टेलर स्विफ्ट इससे ज़्यादा तुम्हारे नहीं हटाएंगे। अब उनकी औकात तो देखो तुम पहले, वो इतने ऊपर के लेवल के लोग हैं, तुम उनसे मुझे कंपेयर कर रहे हो। Pretty, don't you think? Bellflowers, violets, kingcups, pimpernels. I must pick some edelweiss. Take one, but no more. I've put a lot of work into making this cavern coat. Now, shoo! I await someone. Now, shoo! I await someone. अरे BC वेट, कुछ नहीं होता, मेटियो को भी नहीं हटी। इसकी मदद से ही तो KCD2 खेल पा रहा। GeForce Now Cloud। अच्छा, ऐसे बोलो ना, इतना स्टाइल क्यों मार रहे? जो मूवी में जीती वो इससे 10x का होते, वो IT पर है, कुछ नहीं होता। मातियो वाली भी नहीं हटी थी। वेट 2 मिनट में आता। ओके, अरे होता कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं, मैंने 1-2 लोगों का सुना है हो जाता, तो मुझे बस डर लगता है। Fresh smile upon you. Else I genuinely don't give a shit ये होता है कि नहीं। Every man on Why you need all these flowers? Nose, aren't you? Hoofprints, but of bipeds. छोड़े यार, क्या दिमाग लगा रहा।
Freya smile upon you. अभी मेरे आगे 175 बंदे हैं, बहुत है यार। लॉल क्या हुआ भाई? वेलकम बैक बाय द वे। Oh, last night was... Let's go. We've come a long way. You must all enter फ्रीज your टूटने home. वाली थी Shut किसकी? the window. What can I? You Fridtjof? That's right. And what do they call you, Witcher? Me? Drifter, stranger, mutant. Sometimes even by my name. Geralt of Rivia. Ha! A man with a sense of humor. I like that. Well, what can I do for you, Geralt of Rivia? Gremist wanted me to summon you. Need you to help him perform a ritual. A ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? I would go see him for old time's sake, but I've more important matters on my mind. Look about you. The ground. See how dry it is. It's not rained for weeks. The grass in pastures has withered. Sheep are starving. I must bring rain. But fear that... Wait just a moment. Perhaps you could help me. How? I'm a man of many talents, but manipulating the weather's not one of them. I have in mind a different skill, involving your sword. You see, Mother Nature dislikes it when you take something from her by force. She will... Duolinga ki almost saved. 20 days, 2 days streak now. And herself. So fiercely, in fact, that I could use a किस defender चीज? myself. क्या है मतलब? समझा नहीं मैं। What do you say? Sure, I'll help. Provided you go see Gremist afterwards. Agreed. Now follow me. Time for a little storm. Animal sacrifice. Should we burn folk at the stake as they do on the continent? Better a sacrifice of goats and sheep, I think. Skuka, Svarm, Fatna, Hala! It's starting.
डुओलिंगी में एक लर्निंग स्ट्रीक होती है 22 मीन्स हैव स्टडीड लैंग्वेज इन डुओलिंगो एवरी डे फ्रॉम 20 to एटलीस्ट 1 लेसन नॉट टेक 2 क्वेश्चन। अच्छा, एक लेसन करने की कितनी देरी लगती? Winds howling. Lots of them. और कभी कभी रिवीजन लेसन होते हैं 2-3 मिनट के, लाइक उसमें लिखना नहीं होता, बस स्पीक करना होता है। ओके ओके। Storm, damn it. I've not managed a storm that fine for ages. Did you see the drops? The size of eggs. A little busy tending to the foglets. They weren't small either. Ah, yes. Unfortunately, they always emerge. But perhaps that's for the best. For the best? Why? If manipulating the weather carried no risks, it'd not give me peace. Make it rain, make the sun shine. Some would want storms, others a sea calm as a pond frozen over. This way folk petition me only when their need is great, not because they've had a whim. I get it. There are times I wish I didn't have to chase this necker or that drowner. I am learning Spanish, by the way, if you are ponder. Okay. Will you go see Grimace now? With pleasure. After a storm of those proportions, I shall gladly If have you're pondering. help him with his ritual. Till then. Come on, Roach. Meaning, you fucking doggy. Meaning, you fucking doggy. Why would you fuck a doggy, man? Or you can fuck a human? Why would you do that? That's it, Roach.
It's downright flammable. I mean to say that you are like a fucking dog. I mean to say that you are fucking dog. Basically in Hindi. Cyclops won't bother me anymore. Kuch I समझ look नहीं आया. around peacefully now. और ग्वेंट खेला नहीं भाई, अभी तक नहीं खेला. अरे यार मैंने बस खेला भाई. मैसेज टाइप नहीं करने दे रहा वाईटी. ये मिशन मैंने किया है. क्या कर रहा है इसमें? ये अल्केमिस्ट वाला मिशन है. ग्वेंट खेल यार एक मैच. अभी खेलता, रुको ये क्वेस्ट होने के बाद खेलता. ठीक है क्या करना है ये तो याद नहीं अब. ला बेटा हाउला. Distilling recipes. Parchment's a little faded but legible. भाई ये अच्छे से पैराग्राफ लिखा है ना. अब पढ़ने में आसानी होगी लाइन कट करके. ये एक बार मैंने घुसेड़ के नहीं लिखा है. कितनी देर की क्वेस्ट है? आई थिंक थोड़ी देर की है, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी. तब तक वो वाली मूवी देख लूँगा. देख लो.
Find some match. तुम्हें लिंक चाहिए क्या भाई? डिस्कॉर्ड पे है ये भी, इसको भी भेज सकते हो। वैसे भी ये हाउस ही है भाई, ये लड़कियों के लिए बहुत डेस्परेट है। अबे यार ये मैच कहाँ है यार? Okay. Got lucky. Bit of mash left. Here's where the mash goes, probably. Here's where the mash goes. हाँ. Done. Now to boil the mash. Ought to be enough. Time to cool it down. Well, well. Turns out I'm quite the distiller. यार वेट सेकंड आया। आ गया भाई।
गई स्ट्रीम कहाँ गई है भाई है बैक ऑन न्यू डिवाइस बोल रहा है वीडियो अरे यार अब नहीं बोल रहा ओके ओके भाई वो वाली मूवी तो बहुत तबाही है लॉल व्हाट द फक ऐसा क्या क्या है भाई Go. And no disgusting effects like all it's like proper वाह मतलब मजा आता है देख के do me a favor and find more like these from all the countries. Did everything you asked. Phenomenal, my boy. So, Fridtjof, shall we begin? The sooner the better. We've a long night ahead of us. Yes. The ritual is only for members of the inner circle. Thus, my dear apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your tutelage come morn. Will you finally tell me what the ritual's about? Nay. No one likes a meddler. Suffice to say, it's a burning matter now. Shout! तुमने आइज वाइट शिट पता है नहीं मुझे नहीं पता क्रेजी मूवी लाइक आइज वाइट शिट ले भाई नहीं पता भाई कौन है The movie is 90%. Hell nah. We must have another. That's good stuff. Aye, as the base from Moss Gordon and Spirit from Hale Hill. Good times, Fritjof. Good times. Finally, something other than damn potions and transmutations. Guess the ritual's not over yet. Gerd, I thought I told you to
Stay outside. अबे यार नहीं. Turns to the inner circle. That's way too much. Circle, Smirkle. Let the boy. भाई मत भेज मेरे. भाई. सक्स ठीक है. ये तो भाई गलत है. ये अच्छा नहीं लगता. Fun. He's earned it. Fine. Pour yourself some. Garrett, let the lessons begin. Drink hard and study hard. I like the idea. Yeah. I call it stimulation and assimilation. First, वो वाटी you पर होगी. stimulate, and then you assimilate. A shutdown. Let's start with ingesting toxins. Best approach, practice makes perfect. I've practiced a lot already. Good thing. I'll make learning my secret method easier. Look, you take the potion like this, and gulp. Who said old age is a burden? What do you want now? I taught you all I know. Got anything to sell? I do, but it's a... एनीवेज ग्वेंट का क्या हुआ? अभी जाता है. अभी करता. See ya. I'd prefer goodbye. What do you want now? See ya. सबसे पास में यही है. बिना यूनिक कार्ड फ्रॉम हर्मियन. भाई मेरे को बताना ग्वेंट कैसे खेलना है, ठीक है? Well, Gerald's the ice. A witcher. Can we talk? ओके अपने आप में बता देगा. Yen and I went to Hindersfjall. Oh? Did you learn anything? Ciri came through Lofoten. She was wounded when she arrived. Villagers nursed her back to health. Sadly, the Wild Hunt was on her trail. Followed her there. Ciri managed to escape, but the villagers... I know. You needn't finish. I later spoke to those who survived. Suffice to say, Ciri was fortunate to escape. I trust you'll find her soon.
What do the druids think of Skellige's new ruler? Uncrate blood is good blood. Yet Ceres is the first woman to rule. अभी पहले थोड़ा बातें कर रहा हूँ फिर दबाता. Not everyone's pleased. There are 7 clans in Skellige. Each would like a king from their own line, but Ceres will manage. She's not as impulsive as Hjalmar. Thinks first, then acts. With Krach as her advisor, she has every chance to be a good queen. You were made a Hierophant. Congratulations. I thank you. The Skellige Circle chose me years ago, about the time when the old disputes between the clans were reigniting. Job's been mainly politics then. Aye, but I've not minded. Since time immemorial, the druids have wandered betwixt the clans, keeping endless feuds in check. We care for equilibrium, the balance of all things, not just trout populations and streams. We're lucky the Jarls always valued us as advisors. The war. Curious to know your opinion. Well, I believe Emmir's chosen a poor time to wage it. Hard to find any better as I see it, with the North now in disarray. The North is weak, true. But I've the impression the Emperor's dealing with some domestic strife. Far too much to start a war. Radovid is a madman, but a cunning one. He's certain to take advantage. भाई लोगों ने यहाँ डायलॉग वगैरह चेंज नहीं करे भाई, ये पोस्ट गेम के हिसाब से इस तरह लिखे हैं कि मतलब मेन गेम के टाइम के हिसाब से. अरे बीसी बातें करना शुरू हो गया. आप दा कर रहा? Wouldn't happen to play Gwent, would you? Certainly. I got my first deck, years ago, back in Sintra. Proceeded to teach the game to half of Skellige. Why do you ask? Looking to play? Yeah, glad to play around. Northern Realms, Scolia, Monsters, Nilfgaardian Empire. अरे ये तो अलग है. अब तो तुम्हें क्या लगा सेम ही होगा क्या? लाइक कार्ड डिजाइन अलग है. मॉन्स्टर्स ले ले. मॉन्स्टर्स कुछ भी ले लो भाई, अभी मैटर नहीं करते क्योंकि ट्यूटोरियल देगा पहले पीसी, फिर तो अदर ट्यूटोरियल देता, फिर चूज. अरे मैं खेल चुका हूँ ग्वेंट इस गेम में कई बार, बट मैं एक राउंड जीतता हूँ, 2 राउंड हारता हूँ. दैट्स माई स्टोरी.
I studied the game and the keys to lose the first round. Start कर दे. ट्रायंगल बटन वो दब नहीं रहा था. तो क्या करूं, हार जाऊं क्या पहला राउंड? ठीक ही लग रहा है कार्ड तो. हाँ क्लियर वेदर रीड्रॉ कर ले. एक मिनट, रीड्रॉ मतलब क्या बोलते हैं? मतलब सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट करके डाल दूं. पुअर फकिंग इन्फेंट्री. चल पुअर फकिंग इन्वेंट्री है. इसको 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 यूज करूं और क्लियर वेदर का क्या करूं? मतलब क्लियर वेदर और ये दोनों यूज कर लूं, ये कहना चाह रहे हो? भाई मेरे को कार्ड गेम्स तो नहीं, बस की बात ही नहीं. बताना. I'm waiting. क्लियर वेदर भाई चेंज करना था. लीव इट नाउ. अच्छा क्या बात है. वेलकम बाय काजुमा, क्या हाल है? एक्चुअली कंफ्यूजिंग है कि इनके यूजर्स नहीं लिखे साथ में, एनपीसी में लिखे आते हैं साथ में. लाइक बीइंग फॉरेस्ट करके जो भी मुझे कार्ड पता है बट यूज नहीं. ओके क्लियर वेदर भाई चेंज करना था. तो पढ़ लिया. पास ना हो, पास ही करना था भाई, कुछ ऑप्शन ही नहीं था मेरे पे. मैं लेट हूँ.
तुम तो खत्म लग रहे। वीसी इसका यूज क्यों नहीं लिखा है कार्ड का? देखो जरा सेटिंग में कुछ ऑफ है क्या? अभी सेटिंग नहीं देख पाऊंगा, गेम चल रहा है। मैं जीत गया! For the first time I won Gwent in my entire life. For the first time I won Gwent in my entire life. For the first fucking ever time I won Gwent in my entire fucking life. Lovely. My congratulations. You've a good deck, but it could use a bit of supplementation. Here, take this. Thank you, Milo. Thanks. You've a knack for it. So बेटा, much so you ought to. अगली स्ट्रीम में ना ग्वेंट के टूर्नामेंट करा जाएगा भाई पूरा। I gave him his deck, introduced him to the game. But the pupil has surpassed his master. मैं जा रहा हूँ, okay. Now become Gwent till you play Gwent. Yes, absolutely. कल से भाई, कल से। A vile character, but undeniably talented. The first rule of winning Gwent is to lose Gwent. The only way to win Gwent is to lose the first round of Gwent. Can we talk? Farewell. What times? मैं मिस्टर पैरासाइट, तुम भी Gwent एडिक्ट हो क्या? भाई ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा भाई, पूरा चूस के खत्म भाई। I will try my best. बेटा अब टाइम आ गया Gwent एडिक्शन का भाई। Maybe it used to be a thing I hate, but now it's going to be a thing I will love. इसके कार्ड के एबिलिटी और यूज नहीं और लो नहीं, अरे पता नहीं क्यों लिखे नहीं आ रहे। बस कार्ड के भाई देखो यार, डाइस की तरह ही मैं खेलूंगा ऐसे। केसरी का जो डाइस था ना, बस मुझे बेसिक कुछ चीजें समझ आ रही थी और मुझे पता चल रहा था क्या करना रिस्क गलत होगा, क्या करना रिस्की है। रिस्क अवॉइड करा और मैं जीतता गया डाइस। इसमें भी वही करना है कि मैं आप चीज़ों को समझ गया हूँ कैसे खेलना है, बस वही करते रहो और गेम हो गया एडिक्टिव। Yes, but I never played the separate Gwent card game. Separate Gwent card game मतलब? Instead of us getting there. Only played in Witcher 3. अच्छा ऐसे कह रहे हो, ओके। चलो भाइयों, कल की स्ट्रीम में फिर ग्वेंट वगैरह का तगड़ा रहेगा। मतलब फिर अब अगली कुछ स्ट्रीम्स आई थिंक ग्वेंट पे डेडिकेटेड ज़्यादा होंगी कंपेयर टू एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन वाला मोस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट मैं कर चुका भाई। अभी उतना मिल नहीं रहा है, जब देखेंगे कुछ मिल जाए तो कर लें। सेपरेटली ग्वेंट खेल सकते जैसे मैं खेल रहा विदाउट। हाँ, वो डाउनलोड करना पड़ेगा तुमको ग्वेंट, वो वैसा वाला। मैं तो वैसा वाला नहीं खेलूंगा, मैं इसी गेम में खेलूंगा बढ़िया से पूरा। अरे जस्ट लाइक इन केसीडी यू हैड टू कलेक्ट बेटर डाइस टू विन ग्वेंट, यू नीड टू कलेक्ट बेटर कार्ड्स टू बीट अ बेटर टेक ऑफ ग्वेंट। ओके भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे समझ कभी नहीं आया कि बेटर डाइस और बेटर कार्ड्स काम कैसे करते हैं। मैं बस वो नंबर देख के काम चलाता हूँ कि ये 3 नंबर सेम आ गए, स्कोर एंड पास कर दो। बस फोकस में नंबर बढ़ाने पे करता हूँ। ये मुझे इतना पता है कि अगर मैंने स्कोर एंड पास नहीं किया टाइम पे तो ये मेरा बस्ट कर देगा और मेरी सारी मेहनत बेकार। बस वही समझ के खेलता हूँ।
Okay, bye bye.